trip to Bandaardhara, Pimal Farm, Karoli, Maharashtra. Good morning. So after a long time, we are here again. Tona and Toni are on their way to a place called Karoli, near Bandaardhara. We have taken a farmhouse called Pimal Farm, and we plan to go to Pahine waterfall on this trip. It's a one-day trip, 4 hours drive from here. और चलते हैं इस मज़ेदार ट्रिप पे। तो ये रही हमारी गाड़ी और अंदर बैठी हैं टोनी। हेलो, गुड मॉर्निंग। वाटर रोड थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे। मुझे भूख इस वक्त थोड़ी ज़ोर की लगती है, तो मैंने तो सादा डोसा ऑर्डर किया है। और टोनी से पूछते हैं, टोनी ने क्या ऑर्डर किया? इडली तो here we are buying this car perfume। मेरे साथ है, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और कहाँ पे है, कहाँ पे आ सकते हैं ये बता दीजिए। मेरा परिवार गार्डन होता है। परिवार का। तो आपका नाम? जेबा। हाँ, जेबा। तो जेबा भाई अभी हमें एक कार का क्या है वो कार परफ्यूम देंगे और लेट्स डू इट। दीजिए ना, कौन वाला? मेरे को ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, ये वाला। थोड़ी नेगोशिएशन हमारा हो गया है, वो मैं नहीं बोलने वाला इसके ऊपर। देवा भाई के दुकान पे आप लोग आइए और कौन वाला? हाँ, थोड़ा सा लाइट दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए। सोच पे पड़ गए मेरा डिमांड। नहीं टेंशन। इत्र होता है, अतर होता है? इतर थोड़ा यूजुअली स्ट्रॉन्ग ही होता है। हाँ, नाइस। एयर फ्रेशनर में रहेगा ना? हाँ, अच्छा, कंप्लीट। ये अच्छा है। नाइस क्यूट बॉटल्स। ये देखिए, कार वाला भी चाहिए। हाँ कार वाला बेटा है। दिस इज वेरी नाइस, एलिगेंट लुकिंग। मैजिक वॉश, मैजिक वॉश। लाइटली बनाना। कार वाला चाहिए। हाँ, देरी हो गई तो वही रहते हैं। टोनी को कार वाला चाहिए था, लेकिन मुझे ये पसंद है। मुझे थोड़ा झगड़ा होगा बाद में, लेकिन मुझे चलेगा। B-rolls ना। How do you like this frame? Nice, no? Now go ahead and do the. Done. And I must tell you, Zeva bhai is very kind. After having done it all in this, because of Tony's jib, we are getting it done in this. So he's very kind. Please do come here if you can. Details there.
और मुखेर डॉक्टर ने डिटेलिंग एटाই डिटेलिंग मुखेर एक्सप्रेशन हाथेर एक्सप्रेशन ওটা হয় জাস্ট কিপ রেকর্ডিং अभी जस्ट लगा नहीं हाँ सिर्फ जैकेट लगा था हाँ अभी लगा था मैंने जस्ट अपने कमरे में एंटर किया है और मैं आपको इसका एक बाहर का नज़ारा दिखा दूँ। here we go। तो एक नाइस छोटा सा सिट आउट है, उस पर एक झूला है, वो हमारी गाड़ी है। हम लोग उस गेट से आए हैं, अभी बारिश है इसलिए मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। इट्स ए नाइस क्यूट लिटिल फार्म और ये हमारा कॉटेज का एंट्रेंस है। और वो रही टोनी, a small room which has a refrigerator, there's a stove, induction stove, it has an inverter, there's a water cooler, it has an AC but we have to pay extra for that. We told him it's stocked with cool drinks which you can buy, fridge, snacks and it seriously lacks hygiene but that's all you get for kind of budget that you have. These are the rules. So checkout time is 11, late checkout is for 30 minutes $300 you have to pay extra, and you get all the groceries, so you can bring your groceries and cook here. Sitting, it is all set to go to Pahine waterfall and we'll take our car again. So all set and ready, and that's the first view of necklace. Arrived and hopefully find our way to Pahine waterfall, and I'm guessing that this is the necklace fall which is so very much talked about. So अभी मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा के I'll keep talking but I'll show you the place around. अंकल आ रहे हैं।
I'm going to show you right now. At least it is incredible for me. What an incredible sight. Videos में देखने में, images में वो मज़ा नहीं है. It may be tiring, the trek and everything. I say so because I'm old now. But remember, this place is out of this world. अभी दिखाता हूँ. Toni immediately left me and got lost in her own world. हमें ये वाटर क्रॉसिंग करना पड़ेगा. वाटर क्रॉसिंग कब से हो गया था? Toni is doing something. I just broke Toni's heart. She thought that we'll go back from here, which is impossible. I have driven almost 5 hours to reach here, and she thinks that I'll just go back from here. Look at her. She has now her mind working as fast as I can think of a word, but it's working very fast to find a way out of this tricky situation that I put her in, of accompanying me to the fall. Even I won't be going exactly under the fall, but I'll be going pretty close to it. Chale! वन हेल ऑफ एक्सपीरियंस. बहुत मज़ा आया. लाइफ में भी पहले की तरह स्ट्रेस बरकरार है, बट यहाँ पे आने के बाद इट रियली इज रिफ्रेशिंग. इतना लंबा ड्राइव, लाइफ का जनरल स्ट्रेस, आई एम फीलिंग नथिंग राइट नाउ. जो होगा देखा जाएगा. Oh, out of breath completely. I think this is it. Maybe next time. We both are tired. I've driven almost 160 kilometers, 5 hours this morning. Got up at 4:30. I'm out of steam. Well, one last view of the waterfall from here. Still majestic. Toni, she's dead tired. The wild cat. তাকে আমার ইন্সপায়ার করে দিলাম, ওদেরকে ইন্সপায়ার করে দিলাম. Ladies, as you just saw, we've been kind of helping each other because we lost our way.
So sometimes they would go ahead and guide us. Sometimes we would find something out. Though we are not speaking much among each other. But there's a teamwork happening here. I think we are at the end of our. निकलने? हाँ? ओके ओके ओके. इधर से जाओ. हम I don't know. Poor girl lost her slippers. There you go. That's typical Toni. আমরা এখন NH হাইওয়ে 48. हाँ, बहुत कुछ तो बोला लेकिन हॉटपॉट काम नहीं कर रहा है. चाय पीने का मन कर रहा है और कुछ ऐसा फोन नहीं है कि जिससे मैं किसी को बुला सकूं. एंड उधर इतना अंधेरा है कि जाने का भी दिल नहीं कर रहा और इतनी बारिश, तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो रहा हूँ. बट चलेगा. बैडमिंटन खेलो. Good morning, folks. So this is the day 2 of our trip, and today is the day we would love to stay, but these guys are fully booked. Our request to extend our stay was declined politely, of course. And it's pouring right now, so I'll just show you the conditions here. But it is heavenly again, I will put it very simply to you. ये देखिए हमारी गाड़ी, हमारा कॉटेज. हो रही है बारिश, कल रात से हो रही है. थोड़ी देर बाद, जब तक मुझे प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए, थोड़ी देर बाद मैं उठूँगा प्रॉपर्टी पे, चक्कर भी लगा के रहा. वैसे दिल बहुत था आसपास. कल काफ़ी नेट पर रिसर्च किया कि कोई और होम स्टे या बजट होटल्स या एनीथिंग समथिंग लाइक दैट अराउंड दिस एरिया स्पेसिफिकली कुछ मिल जाए. अनफॉर्चुनेटली एवरीथिंग अराउंड दिस एरिया इज ईदर वेरी एक्सपेंसिव और इट्स नॉट देयर. So this was the best options for us, and I really wanted to stay, for one more day. So क्या करेगा? सुबह की पहली चाय, loaded with sugar, loaded with milk. Right now I don't give a damn. एक और मंगा लिया है क्योंकि ये ना थोड़ा डिसीविंग कप है. जितना बड़ा दिखता है उतना बड़ा है नहीं. तो ये एक पहली से तो हो नहीं रहा.
because I need something to shake me up. So at least 2 cup चाय तो बनती है. Sugar shots, long drives back home. पास में एक नेचर्स व्यू पार्क करके है, so we'll go and check if it's our budget and if it's still available. 2 मिनट है यहाँ से 900 meters for the Google Map. तो वहाँ चेक इन कर जाएंगे और एक दिन और इस खूबसूरत जगह का मज़ा उठाएंगे. But if not, the other option is pretty far. It's like almost 80 kilometers from here. It's in Shahpur, and we are not that keen to go that far. And there is not much to do over there. It's just a farmhouse. Such scenic beauty is very rare to find. And all the other options around here are very expensive, and we didn't come prepared for it. Simple as that. मान नहीं भाई. Budget traveling कर रहे हैं. So if not Nature's View Park, हम यहाँ से straight back मुंबई की ओर चलने पड़ेंगे और रास्ते में जो भी मज़ा करेंगे. That's about it. और look who's joined me. Toni. Good morning. Toni has just woken up and she's had a very good night's sleep and she's also out. अभी बाहर निकल के बाहर का नज़ारा ले रही है. सुबह का पहले कप तक चाय पी रही है. पहले चाय का कप पी रही है और सिमिलरली शुगर शॉट्स वो भी ले रही है. लेकिन उसे अच्छा लगता है. ये मेरी तरह वो केयर नहीं करती है. जैसे दूध और शक्कर वाली चाय बहुत पसंद है, स्पेशली ऐसे मौसम में. आपको कुछ बोलना है आज के दिन का प्लान? तो मैंने जैसे ऑलरेडी इनको बोल दिया कि हम यहाँ से निकल के अभी नेचर्स व्यू पार्क एक बार चेकआउट करेंगे. अगर वो हम अफोर्ड कर सके और अवेलेबल है तो शायद रह जाए वहाँ पर. दूसरा ऑप्शन था वो शाहपुर में, वो हम ड्रॉप कर देंगे क्योंकि वो दूर है और कुछ खास नहीं है उसके आस-पास करने को, जस्ट अ फार्म हाउस है. तो यहाँ से निकल के नेचर्स व्यू पार्क चेक करेंगे. वो नहीं मिला तो फिर घर की ओर निकल सकते हैं. प्लान सही है. इसमें बैडमिंटन मैच भी है. हाँ, इनका एक अजीब सा डिमांड है, रिक्वेस्ट नहीं डिमांड है कि इनके कुछ फोटोशूट्स होंगे. एक इस बैडमिंटन रैकेट के साथ पोज करेंगी वो. और दूसरा क्या है? अम्ब्रेला डांस. अम्ब्रेला डांस वो क्या होता है? अम्ब्रेला लेके डांस करते हैं. तो बारिश में अम्ब्रेला करेंगे तो मैं उसके फोटोग्राफ्स लूँगा. ऑब्जेक्टिव आपको पता ही है, ये स्ट्रेट इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लैंड होने वाले हैं ताकि इनके दोस्त जो है वो थोड़ा कमेंट करें. वाह किधर हो, हाउ ब्यूटीफुल. ये सब सुनने में चाहे तुम जितना भी बोल लो कि आई डोंट केयर, बट द बैक ऑफ द माइंड यू ऑलवेज केयर. So all set for the property tour. Toni as usual फिर से लेट है, लेकिन कोई बात नहीं. Lunch. That's the third cottage. Someone is already living here. Now we are going from around the cottage where we are living in. Behind the cottage, just to enjoy and have a closer look of the stream. And look at this small bridge, and we can cross it. Woo! Ki maza! Ki maza! Look at that. Wow. That's the view of the cottage. That's the view of the property. That's where Toni is standing. Toni actually loves such spot which reminds of her home in Dharmanagar. This is exactly
the kind of environment they have. That in Bhavinagar, and she misses it a lot. So whenever she comes to a place like this, वो रुक जाती है कुछ कुछ चीज़ों के पास. पापो डॉलर पास जावे ना. I have to. Sometimes आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं किसी बच्चे के साथ आया हूँ क्या, क्योंकि वो वैसा ही बिहेव करती है. एंड शी डज नॉट नो स्विमिंग, एंड उसको पानी के साथ 2-3 बार एक्सीडेंट होते होते बच गई है वो. लेकिन वो बात नहीं सुनती है, वो हमेशा पानी के पास रहती है. एंड आई हैव टू कीप अ वॉच ओवर हर कॉन्स्टेंटली. ओके लेट्स गो. पुपा पीछे ना आसो, पीछे ना आसो ना. Look at her. She wants to put her leg, or she wants to feel the water. Nah, that is dangerous. पा झूले बसते पारिस. आए कि घोड़े नहीं. Here we go. Wow. This is one hell of a trek. Look at this. भाई फुल पैसा वसूल. इनफैक्ट वसूल से ज़्यादा. Thank you, Mr. Thakkar. Yeah, you can fine-tune the property all the time, but you have a wonderful spot. I'm not going by the hotel standards, living standards, hygiene standards. They're okay, they're there. You're giving a good rate. But you got the best spot. One of the best spots. Of course, there might be better ones, but this is no way too far behind. So congratulations, Mr. Thakkar and your family, for maintaining such a beautiful spot. I don't know if we are stepping out of the property limits. We are exploring. Look at this. Tony's special requests are capturing these flowers. Let's go. क्या ही बोलूं, like the bloggers say. Legs clean करूं. Just like that. मजा. चला चला चला. बस हम और कुछ ही देर में यहाँ से रवाना हो जाएंगे. राम राम. हाँ हाँ हाँ. पाऊस चालू आहे. पाऊस चालू. मोकार पाऊस 4 दिवस. और आज आमुष आहे. मराठी नको आहात. आज आमुष आहे ना. हा आमुष आता राम झाली का नाही. त्यामुळे पाऊस जास्त. हा हिरामन सुंदर. हिरामन आपला मुलगा नाही. हा हा हिरा हिरा. आपण इथे राहतो आपल्या घरी. हा तुम्ही राहते का नाही. हा आपल्या घरी समोर. अच्छा अच्छा हिरामध्ये घर आहे. हा हिरामन. हा तिचे वडील आहे मी. अच्छा अच्छा पप्पा. हिरामन. नमस्कार नमस्कार पप्पा. तुमचं नाम काय आहे. शंकर आहे. शंकर आहे. ये जगह के बारे में कुछ बोला ना. जागा. हाँ ही जागा आपली जागा. ठक्कर साहेब आपली 2 एकर जागा दिली. हाँ ठक्कर साहेब. अच्छा अच्छा अच्छा. आपली तिकडे 9 एकर जागा आहे. तुम्ही आलते ना. हाँ. 9 एकर खंडाची बांधली. अच्छा. 2 एकर ठक्कर साहेब आपण दिली. अच्छा अच्छा अच्छा. गर्मी में कैसा रहता है, ठंडी में.
मराठी नहीं आज हा, तुम्हाला हिंदी येते ना आम्हाला हिंदी एवढी येत नाही आम्ही मराठी बोलतो. गर्मी हा गर्मी हाँ गर्मी के दिन में कैसा रहता है तुमचा गर्मी तो तुमचा एकदम मस्त एकदम वातावरण लय भारी राहतं. हा. हाँ और सर्दी सर्दीत नाही पण गर्मीचे एकदम गर्मी से मस्त है ना हा. गर्मी में ये धुलिया जैसा गर्म नहीं रहता नाही ना नाही हाँ? एकदम मस्त एकदम वातावरण भारी राहतं. हाँ वातावरण भारी राहतं. अच्छा बढ़िया गावाकडे तर मंदिरातून हाँ मंदिर आहे म्हणजे गाव आहे आपलं खरुली गाव. खरुली गाव हा, हे गाव आहे खरुली गाव आपलं. हा. तर आपण आपल्या मालकीचंच घर बांधलं इथं. हाँ हाँ इथं राहते हा. गावातही घर आहे एक आपलं. हे गावामध्ये गाव आहे. गाँव है हा, अच्छा खरुली गाव. आज तो हम चले जाएंगे नेक्स्ट टाइम आएंगे ना गाँव घूम सकते हैं ना यहाँ हा, पे हा, हाँ? हा. आप लेके जाओगे कौन लेके जाएगा हा? गाँव घुमाने कौन लेके जाएगा गाव हाँ खरुली खरुली. हाँ कोई लेके घूमना चाहते हैं गाँव हा इधर इधर इधर. अपने आप चले जाएंगे हो. ठीक है दादा यू हर्ड इट खूप छान हा खूप छान वैताना धरणाला पाणी गेले. हाँ हे पाणी गेलं मुंबईला. मुंबईला ना हाँ वैतानाचं पाणी मुंबई. वेतरना लेक एंड पूरी मुंबई हाँ इसी का पीते हैं हम लोग है ना वाओ सो दिस वाटर दादा बोल रहे हैं कि वेतरना लेक जाएगा और वेतरना लेक से मुंबई को जाएगा और यही पानी हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं मुंबई में थैंक यू दादा वाह আমি এখানে বসতে চাই। बस this is something Tony wanted to do for a long time since a long time in fact टोनी ने मुझे भी अपने साथ बिठा लिया हम बैठ चुके हैं वहाँ से यहाँ पे ये हम फुट मसाज नेचुरल फुट मसाज দেখি কম্পিটিশন কার মধ্যে জুড়ে যায়। And winner of this game is Miss Number 9. बाकी तो आप समझ ही गए होंगे heavy walk that is how we are looking right now as we walk oh they are building another one oh they are building two more so wow here we are entering the under construction cottage looks like a decent one oh there is a bathtub and a bathtub with a view क्या बात है चार्जर पर फैंटन गाइस तो कैसे नाइस ग्रीन व्यू आई कैन लुक एट many of my vacations being spent here आय बिना ते काय अरे एखादा फोटो तू if I tell anything to Poppy her first reaction would be no it will take me at least 5 attempts to convince her to do the smallest of little things that I want her to do so now I want her to come inside because we'll be under the shed और यहाँ से अच्छा व्यू मिलेगा और उसका जो भी शूटिंग वूटिंग करना है हम लोग कर सकते हैं और वो अपने कैमरे से करना चाहती है तो उसका कैमरा में पानी में नहीं जाएगा लेकिन वो नहीं मानेगी
He is so happy. Look at this tree. Coming from there. Coming all the way from there. And going down into the sea. Da-da-da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-da-da. ये आ गया है हमारा एग करी। इसे भी हम खाएंगे विथ माय बिरयानी, जो वो गरम करने लेके गए हैं। ये हम खाएंगे, ये खाएंगे, पैकअप करेंगे और वापस। द कलर इट्सेल्फ सेज कि क्या चीज़ है ये। टेस्ट करके भी बताएंगे कैसा लग रहा है। थोड़ा सा अभी चख लेते हैं। ऑयली, स्पाइसी, मेड विथ कोकोनट। And damn good. Look at this. What a wonderful place. On our way back home, we just stopped by to admire the beauty again. ये देखिए, उस रास्ते से आ रहे हैं, उस रास्ते को चले। Look at पहाड़ों से look at that waterfall. So this was one of our stops, and we have two bikers out there. They're doing the same thing which we are doing, but they're probably having a little bit more fun than I am. See, the entire bikers gang is there. The entire bikers gang is there. Hotel Sanskriti. So just a little pit stop here. We're on the Vikramgarh Wada road. We still have a couple of hours to go. We stopped here for a coffee break. So let's go. It looks nice. There is Puppy. कॉफी मिलेगा? कॉफी, चाय, चाय कॉफी कुछ भी? चाय पिला दीजिए। चाय पियेंगे, 2 पिला दीजिए और शक्कर कम दीजिए। ये खाबी? खाबी किचू बॉक्स। So nice looking place. It's been a nice trip till now. ये वाडा है? ये जगह कौन सा है? 2 किलोमीटर आगे है। ये जगह कौन सा है? इसका नहीं मालूम। अच्छा, ये विक्रमगढ़ वाडा रोड पे। मैं ड्राइवर हूँ, बड़ी गाड़ी चलाता हूँ। हाँ, तो आप ब्रेक, आप खाना खाने रुको। खाना खाने आए तो खाना ही अच्छा, बंद है? नहीं है, चालू भी ड्राइवर और आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, टाइम आराम से वैसे की आप। टीना कंपनी है ना रबड़ वाली, हाँ हाँ, उसमें गाड़ी लेके आए थे। कहाँ? आप तो लग रहा पंजाब से हो।
पंजाब से आ रहे हो? नहीं, हम यूपी से हैं। अच्छा, यूपी से हो। आपकी बोली पंजाब की लग रही है। पंजाबी हम बोलते हैं। हाँ, बोलते हो? पंजाब में चले हैं 4-5 साल, पंजाब में गाड़ी चलाई। अच्छा अच्छा, तो हो किधर से आप लोग? अगर बता सकते हो तो बताओ। यूपी। यूपी में? तो कितने दिन का ट्रिप था आपका ये? दिल्ली बम्बई का। आप दिल्ली से आ रहे हो अभी? दिल्ली से आए। हाँ, तो एक रात? अभी बॉम्बे दिल्ली से आए। हाँ फिर बॉम्बे से माल भर के यहाँ आए। हाँ फिर यहाँ खाली करके फिर बॉम्बे जाएंगे वापस। हाँ। फिर वहाँ से दिल्ली का भरेंगे जाएंगे। अरे बाप रे बाप, कितना दिन लगेगा घर पहुँचते पहुँचते लौटते? यहाँ से हाँ नहीं, अब जब से घर से निकलो हो कितने दिन का ट्रिप होगा ये? अगर ट्रिप जैसे गाड़ी खड़ी नहीं हो हमारी, हाँ टाइम टू टाइम लोडिंग अनलोडिंग हो जाए, हाँ हाँ, तो 8 दिन में। 8 दिन में घर वापस? हाँ हाँ, और 8 दिन में। तो उसके बाद थोड़ा दिन रुकते हो कि फिर इमीडिएटली चल पड़ते हो? नहीं, परमानेंटली हो जाए लोड तो तुरंत आते हैं घर वापस। फिर वापस आते हो? तो आराम नहीं करते हो क्या 1-2 दिन? अब खड़ी है आराम है, क्या करना। ठीक है ठीक है ठीक है। अब गाड़ी खड़ी हो जाती है तो फिर सोना खाना है, करना कुछ है नहीं। करना कुछ है, हाँ ये बात तो सही है। चलती है तो घर लगातार चलता ही चल, रहती है। रात को भी लगातार चलाते रहते हो? नहीं तो आपके साथ तो कोई और भी साथ में चलाते होंगे ना रात? अकेला 24 घंटे चला लेते हो? नींद नहीं आती है रात को? अभी आदत पड़ गई है नहीं? 24 घंटे बनाओ चलाने के बाद आती है। हाँ 24 घंटा तो फिर तो शरीर ही जवाब दे देगा। 24 घंटे के बाद 2-3 घंटे सोने को मिलते हैं। वाह, तो देखा आप लोगों ने? अरे आपका नाम बता दो ना। क्या चला रहे हो? ये मैं यूट्यूब चैनल है मेरा, बता दो। मेरा नाम शैलेश कुमार है। हाँ, तो शैलेश कुमार जी 24 घंटे गाड़ी चला सकते हैं, देख लीजिए। हम लोगों को 4 घंटे गाड़ी चलाने के बाद हालत खराब हो जाती है। चाय आ गई, पी के बताते हैं कैसा है। मस्त एकदम। Our 2 little friends deprived of their freedom, but one can say nothing. चाय पियो चुपचाप, निकलो, एक्टिव्स नहीं बन पाएंगे, बट जो भी हैं, it's a polite request to everyone who think they are taking care of the birds this way. Please give them their freedom, give them their food. If they want to come back to you, they'll come back, but don't cage them. Just put yourself in their place. Me being a claustrophobic, I tell you, it is excruciating. So किसी की freedom मत छीनो, चाहे कैसे भी हो, mental, physical freedom in whichever form. Share it, give it, celebrate it, enjoy it. Never, ever take it. So Toni says that this flower is called Lakshmi Pama, and apparently it is famous. Rare. You never know. You never know. It all comes down to this. Desperate to go home, कब घर पहुंचे, लेकिन मर्फीज लॉ
जो गड़बड़ होना है होएगा ही, वो जाने नहीं देंगे यार. Stand still in traffic. 21 minute delay. Non-stop rain. एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका. Poor visibility. जो 3-3.5 घंटे से लेकर 4 घंटे का जर्नी, इट इज ऑलमोस्ट लाइक कितना 7 hours. But I'm happy. Life goes on. This is the fun. Come back to Mumbai and trying to end our day with this very light dinner. Try it. I always love the Chinese here. It's been fabulous. Green Court Club, Mirror Road.